Hello and welcome to the highlights of Day 3. It's round 7 of the QeA Trophy. Southern Punjab versus Balochistan at the National Stadium, Karachi. It's been all about Southern Punjab, how they've bowled and kept the pressure on Balochistan. In their second innings, they finished off Day 2 at 149 for 2 after facing 52 overs with some good partnerships between Saif and Rafiq, and earlier on between Zain and Imran Rafiq, helping them to just strengthen that lead that they have. Balochistan bowlers have been struggling through and through. Jalad got 2 wickets, but they need to get quick wickets on Day 3 and take some hold of this game. Match summary tells us that Southern Punjab is leading through the days. With having a lead of 241, they're looking to pile on more. Let's join the action on Day 3. Play. Zara sa jallo, shabash. पहला बॉल पहले ही बॉल पे सिंगल हासिल किया। रन्स लेना बहुत जरूरी है। 242 की लीड हो गई है क्योंकि रन्स बहुत मैटर करेंगे इस मैच में। पहला ही बॉल उनको लेग स्टंप पे मिला सैफ बदर को और हल्के से खेल के 2 रन हासिल किए। अच्छा मौका है ये सैफ बदर के लिए क्योंकि स्टार्ट्स तो मिले उनको हर मैच में, लेकिन बड़े रन्स नहीं बना सके। और इस पिच की हम बात कर रहे थे, बहुत पैचेस मौजूद हैं, क्रैक्स मौजूद हैं, स्पिनर्स को बहुत मदद मिलने वाली है। स्टंप पे बॉल था, उसको ग्लाइड किया है पॉइंट के फील्डर के पास से 4 रन हासिल किए। तो यहाँ पर पहली बाउंड्री आज के दिन की। ऑफ स्टंप पे गिरा बॉल था, उसको हल्का सा ग्लाइड किया जस्ट बाएं जाने फील्डर के, कोई मौका नहीं उनके लिए। तो यहाँ पर पहली बाउंड्री हासिल की। एक बार फिर उसी एरिया में थोड़ा हवा में बॉल था, 4 रन्स के लिए बॉल चला जाएगा। तो अपने फेवरेट एरिया में मैक्सिमम रन्स लेते हुए अली रफीक 75 रन्स पे पहुंच गया और उसके साथ 100 रन्स की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पे सदर्न पंजाब के लिए 100 रन की पार्टनरशिप जो हो गई। 133 बॉलों में बड़ा अच्छा कवर अप कर लिया है। बहुत तेजी के साथ ऑन पे खेला और बहुत अच्छी क्रिकेट बोथ ऑफ प्लेयर्स। और 50 रन अपने मुकम्मल किए यहाँ पर। सैफ बदर ने बहुत अच्छी इनिंग खेली है। सैफ बदर ने 63 बॉलों में 2 चौके लगा के निकल के खेला है। बहुत ही अच्छी शॉट इमरान रफीक, गैप में शॉट मिड विकेट के फील्डर के सर के ऊपर से पिच ऑफ द बॉल। ये देखें, ये बहुत लेट निकले और टाइमिंग बहुत जबरदस्त थी। वाइडर खेला लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास, कोई मौका नहीं। तो यहाँ पर एक और बाउंड्री हासिल हुई है इमरान रफीक को। And then after lunch, they'll probably have... Oh, it's going to be a run out here. Has to be good throw. Yes. That's the only way you can lose a wicket here. What was the hurry there? Imran Rafiq in no mood to go for that single. Have a look at this. He just plays the shot. He's looking at the shot. Yeah, he gave him that trigger movement that made Saif Badr believe there's a single available. I don't know if that was necessary, but he's absolutely livid. He would be. Out for 53, the partnership is broken, 189 for 3. Can Balochistan target the new batsman and try to get a couple of wickets here? Make Imran Rafiq also think, because he's right now thinking that he's at fault. Try to get him now. Look at Imran Rafiq, he gives that trigger movement. He makes Saif believe it is a single, so he's in top gear, Saif. Tough for him to stop himself and then turn around and come back. It's not his fault. That's class. It's really well done. Just waited for it and opening the face of the bat. Had it been a quicker bowler, that would have gone for 4. Good timing on it. Ends up getting 3. रन आउट होने का यहाँ पर चांस होगा और रन आउट।
सलमान अली आगा हल्का सा खेला था कवर्स की तरफ, लेकिन बहुत ही क्लोज था। इमरान को चाहिए था फौरन मना करते, तो यहाँ पर एक और नुकसान उठाना पड़ा रन आउट की सूरत में। जी हाँ, ये अजीम घुमन थे कवर पोजीशन पर। उन्होंने बड़ी महारत से गेंद को पकड़ा और थ्रो फेंक दिया। तो दो खिलाड़ी यके बाद दीगरे इमरान रफ़ीक के साथ रनिंग करते हुए रन आउट हुए हैं। 209 पर 4। मोहम्मद उमर नए आने वाले बैट्समैन, राइट हैंड बैट्समैन है। 4 मैच खेले हैं, 78 रन अब तक बनाए हैं। 6 रन आउट और रह गए। नए आने वाले बैट्समैन है उमर। स्टंप के बाहर गिरा बॉल था, उसको खेल दिया है गली के पास से। 4 रन यहाँ पर पहली बाउंड्री मोहम्मद उमर की। थोड़ा सा अपिश था, लकी रहे कि गली के फील्डर के पास नहीं गया, थोड़ा सा वाइडर था कि ऊंचा गया है। लेग साइड में खेलकर यहाँ पर कम से कम 2 रन लेंगे। नहीं पहुँच सके लॉन्ग लेग से फील्डर, उनने डाइव भी की और आखिर में गेंद रोकने से खासे रहे तैमूर अली। पहला चौका लगाया मोहम्मद उमर ने। काफ़ी वाइडर खड़ा किया हुआ था फील्डर, फाइन लेग की तरफ गया। यहाँ पर एक और बाउंड्री हासिल हुई है उमर को। Can be a double bluff too. Oh, that's a bail. They're going to bail. Yes, get out. That's a big, huge wicket for Ahmed Asif and Balochistan. The wicket they've been searching for since morning. Imran Rafiq got out in his nervous 90s. 97 he scored. I don't know if he's actually had any touch on it, but then down the leg side, good sharp ball. I told you, it's going to be a problem. He might not get there. He immediately put his hands up, suggesting to the umpire he hasn't touched it. Anyhow, whatever said and done, 217 balls for 97. Amir Yamin now coming into bat at a very crucial time because we've got 10 minutes to lunch. He's into his 50th match, 2,047 runs, good average of 37, 10 50s and 400s and a best of 225. This is how Imran Rafiq went. He was not happy with the decision though. That's a big one. Straight down the track. One bounce and over the boundary line for 4. So good intentions by Amir Yamin. Oh, look at that. Pitched up. Straight over the mid-on's head for 4. End of the over. It's lunch. Kashif remains none for 82. And Southern Punjab in this session have faced 27 overs, 87 runs scored, 2 run-outs and a caught behind. So at lunch on day 3, Southern Punjab adding some more runs, 236 for 5, lost 3 wickets in the session, but made some good addition in terms of runs. 97 is what Imran Rafiq got, was struggling a bit in the 90s and eventually lost his wicket to Ahmed Asif. 2 run-outs helped Balochistan believe that they had a bit of a share of this session. The partnerships clearly stay that Saif Badr and Imran Rafiq's partnership is of importance for their second innings pile-up of runs, 118 between them of 162 deliveries, where Saif Badr was the one who scored almost a run a ball. And here are the wickets, 2 run-outs, 2 for Jalad and 1 for Ahmed Asif. 236 for 5 in the 79 overs bowled. Southern Punjab have a lead of 328, and let's see what happens in the session post-lunch. मोहम्मद उमर अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, 17 नॉट आउट हैं। आमिर यामीन नॉट आउट हैं, 6 पर 1 चौका लगा चुके हैं। और ये गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई गई विकेट कीपर के पास, और इस तरह वक्फे के फौरन बाद जल्लाद ने विकेट हासिल की। और आमिर यामीन आहिस्ता आहिस्ता मायूसी के आलम में चलते हुए आ रहे हैं पवेलियन की जानिब। ये देखें, अच्छा बॉल हुआ, लेकिन आगे का बॉल था, खड़े खड़े खेल गए आमिर यामीन और एज हुआ, तो इस तरह आमिर यामीन 6 रन बनाने के बाद आउट हुए, 236 पे 6।
एम्पायर का इशारा, आउट। बहुत ही अच्छा बॉल जल्लाद खान का। पिछला बॉल अगर आप देखें थोड़ा फ्लाइट के साथ किया था, टर्न हुआ, और इस दफ़ा आर्म बॉल किया था और बिल्कुल विकेटों के सामने इमरान ने पैड पे खा ली, तो एम्पायर ने कोई हिचकिचाहट के बगैर उनको LBW करार दिया। जी हाँ, क्रीज का भी अच्छा इस्तेमाल किया। बल्ला पैड के गिर्द आया था, बिल्कुल स्टंप्स के सामने थे। अच्छा फैसला एहसन रजा का। तो पहली गेंद पर वापस जाना पड़ा। बड़ा सनसनीखेज आगाज इस सेशन का किया है बलोचिस्तान ने। इमरान बगैर कोई रन बनाए LBW आउट हुए 236 पर 7। जाहिद महमूद 46 मैचों में 529 रन बनाए, 2 मिड सेंचुरी भी इन्होंने भी बनाई है। अच्छा शॉट खेला। पहली इनिंग्स में अपनी फॉर्म दिखाई जाहिद महमूद ने 45 रन बनाकर, और दूसरी इनिंग्स का आगाज़ भी तकरीबन वहीं से किया है। शानदार चौका, कदमों का इस्तेमाल किया, फ्लाइटेड गेंद को खेला। 3 स्लिप्स, गली पॉइंट कवर मिड ऑफ ताज वली के लिए। दूर से खेला और गेंद उड़ती चली गई गली के ऊपर से 4 रन्स के लिए। ये बहुत ही वाइटल रन्स हैं पहली इनिंग्स की तरह जो जाहिद के बल्ले से इस वक्त निकल रहे हैं। इस बार फिर इस मरतबा एज पाया और गेंद गई विकेट कीपर की तरफ, और इस तरह जाहिद जो लगता था कुछ देर की ही बात है जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे। 17 रन बनाने के बाद आउट हुए 258 पे 8। आने वाले बैट्समैन मोहम्मद इलियास। This will be 4. There is no fielder on fine leg. Just clipped it towards leg stump. Ilyas can bat. Definitely he has that potential of getting boundaries. This young lad. Wrong line this time. There is no fielder on leg side. That's going to be 4 runs. If you have a gap between the slips and the gully, and then you edge it all along the ground as this was done, and it's going down to the 3rd man boundary, raced away. That's a lovely shot. That's a very good shot. He middled it well. Nice sound of the willow. And once again the ball slowing down, because that side of the National Stadium's turf is a bit heavy, or heavier than the one on the other side. That's a nice stroke. Good shot. Going down towards deep mid-wicket, and it's going to be 4 runs. So they'll be coming thick and fast at the moment. 371. So what did we say? If they have 90 overs left tomorrow and 50 say today. हाँ, उन रन की कितनी अहमियत है इस मैच में वो शायद नंबर्स के हिसाब से आपको ना लगे। उमर के 50 रन मुकम्मल हो गए यहाँ इस सिंगल के साथ। पहली निफ सेंचुरी उमर की। एज किया अयाज तस्वुर थे दूसरी स्लिप में, जो कि अच्छे ऑलराउंड फील्डर हैं। एक और विकेट उमैद आसिफ को मिल गई। थोड़ा बैक अवे किया मोहम्मद इलियास ने बाउंसर के ख्याल से, और इस तरह वो अपनी विकेट गंवा बैठे 292 के मजमूए पे। जी आपकी बात सही है। ऐसा लगा थोड़ी देर के लिए कि ज़रा एक्स्ट्रा बाउंस था जिसने थोड़ा इनको सही पोजीशन से हटा दिया। जिस तरह खेलना चाहते थे वो हुआ नहीं, और इलियास इस तरह से आउट हो गए 6 रन बना के। इतना उन पर कोई इल्ज़ाम भी नहीं होगा, टेल एंडर हैं और अच्छी गेंद थी। एक्स्ट्रा बाउंस मिलता ही है उम्मीद को उनकी हाइट की वजह से। 292 नो आउट। बार फ्लिक किया, फील्डर हैं वहां पर, लेकिन ताज वली के पास मौका नहीं था। अंपायर का इशारा देखना होगा, और गेंद बाउंड्री लाइन जो है क्लियर कर गई है। तो देखिए ज़रा दूर से खेले, लेकिन अच्छा फ्लिक शॉट था। जहाँ फिर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, 4 रन मिल जाएंगे।
खुशनसीबी के 300 रन्स भी मुकम्मल हो गए दूसरी इनिंग्स में 7 रन के। ये देखिए कैच ले लिया इमरान ने और 5वीं विकेट हासिल की। जल्लाद खान ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर की जानिब से। उमैर आउट होने वाले आखिरी बैट्समैन थे और ये छठी बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है जल्लाद खान ने। उनके लिए ताली बजनी चाहिए। So Southern Punjab in their second innings amounting 312 all out in their 96.5 overs, 97 from Imran Rafiq, 53 from Saif Badr and a 59 from Umair helped them to get there and a 404 run lead, giving them a target of 405. It's going to be huge. The partnerships tell us that the bigger one was 118 between Saif Badr and Imran Rafiq, and then small chunks of 49 and a couple of them in 20s helped them to get to 312. Building up on a lead, the bowling performance from Balochistan struggled a bit, though Jallad got 5 wickets and Umaid got 3. 2 of them were run-outs. Balochistan now have a target of around 400 plus to chase and win this game. Azim Ghumman is going to open 99 matches for the boy from Hyderabad. And that's Imran Farhat, 227 matches, 15,526 runs, 42.7 average. He's played for Pakistan, played some very good innings, and it's going to be everyone's favourite, Amir Yamin. Amir Yamin bowling to Azim Ghumman. And I think these are good batsmen. You have Imran Farhat, you have Azim Ghumman. Here is Amir Yamin. That should be out. That's out, caught behind. Has it started? Amir Yamin, you beauty. The ball is swinging for him once again. And that's a pair for Azim Ghumman. Could not score any run in the first inning. And 0 again in the second inning. A very good start by Southern Punjab. That's a pair for Azim Ghumman. In fact, the origin of calling this pair is from the pair of spectacles. Yeah, center. Off stump. This one is tucked away. They'll get at least 2, if not 3. The ball goes into the shadows of these stands and 3 runs are scored. Imran Farhat is not out 1. This one's going down to the boundary, won't be cut off. That's 4 runs and it is off the bat. So it's 4 more runs to Ali Waqas and 4 more runs to Balochistan. And that's going to be 4 runs. That is a typical Imran Farhat cover drive. Lovely shot. How many times have we seen it in the past? Imran was playing for Pakistan, he was playing for in Lahore, and all over the country, and in fact all over the world. Is that gone? Yes, that's gone. Go and fetch it. Every time I meet Ilyas, I say, what happened in Hyderabad? He says, oh, come on, let's forget that. It's a nice shot. Lovely shot. With a flourish, he dispatched it. There was a touch of disdain in that shot. Over and time for tea. 5 bowled, 36 for 1, and that is going to be tea. There's a session to go in this day and a full day tomorrow. That's how the sessions have went today. 29 in the first, 91 runs, 5 wickets, 108 runs and 4 wickets in the second session, but a good run rate of 5.18.
So, eventful second session on day 3. Balochistan in their second innings. 36 for 1. Again, Azim Guman out from lower, scoring the same name. Amir Yamin striking for Southern Punjab. Amir Yamin 1 for 18. Ilyas along with him also bowling well, none for 18, keeping the pressure on and making the task difficult for Balochistan with 4 sessions to play in the game. That's the match summary on day 3. Tea time. 369 is what Balochistan require to win this game. They've got 4 sessions to do that. They're 36 for 1 and still Southern Punjab in control. Shot and beats the fielder as well. Had to beat the fielder because it was so good looking when he drove that. It deserved a boundary. Beautifully timed. Appeal for LBW. Out, says the umpire. On your way, mate. Thanks for coming. Nice knowing you. And that's the second wicket. Ali Waqas goes LBW to Amir Yamin. The demon strikes again. And Balochistan are 46 for the loss of 2 wickets. And that is the reason why umpire Asif Yaqub gave him out. Pitched all right, was straightening up and would have knocked over the leg stump. Very well played by Akbarur Rahman onto the onside. Akbarur Rahman is from Karachi, by the way. He's a local lad. Pull that one. That might beat both of them, in fact. That's beautifully placed. It bisected deep backward, square leg and long leg. Perfect. Between them down to the boundary for 4. अच्छा स्ट्रोक, बिल्कुल दौड़ने की ज़रूरत नहीं. शानदार टाइमिंग. इस बार झुककर खेला सामने की जानिब इमरान फरहद ने और अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली. कप्तान की इनिंग्स खेली है. That was a wide ball, by the way. और लेग स्टंप पे गिरा हुआ बॉल था. विकेट कीपर उमर सिद्दीक पकड़ने से कासिर रहे. तो ये एम्पायर का इशारा 22 के 4 रन. लेग स्टाइप गेंद गिरा था. ये टर्न होने के बाद और बाहर की जानिब गया. काफ़ी लेग स्टंप पे गिरा था और उमर सिद्दीक जो है वो पकड़ने से कासिर रहे. अब ऐसा दिखाई देता है कि किसी भी वक्त आज का खेल अंपायर ख़त्म कर सकते हैं. देखिए आज के दिन 10 विकेटें गिरी और पहले दिन हमने देखा था कि 16 विकेटें गिरी थी. So at the end of day 3, all 3 probabilities look alive. A draw, a win and a loss for Balochistan. With a good partnership between Imran Farhat and Akbarur Rahman, they managed to put on 112 in their second innings. Important is just 2 wickets down. This partnership of 66 is of great importance, and they've taken 119 deliveries, so they're also consuming time which they need to in case they go for a draw. The bowling, 2 wickets for Amir Yamin. He's the only one, and he's the one who's been the threat through and through in the game for Balochistan. Rest of the guys were seen off pretty nicely. So, at the end of day 3, it's 293 what Balochistan need, and they've got 3 more sessions to go on the final day. Can they fight it out and survive, or get the score that's required? All action is right here. Thank you for joining us on the highlights of day 3, and hope you'll join us again when we get you day 4 highlights.